Okay, so we all heard that stress causes most of the diseases, and it worsens the scenario in many of the diseases like diabetes. आप देखेंगे the diabetes sugar levels suddenly rise when you suddenly have a stressful incident in the family or something, and the BP, तो of course we all know कि hypertension is one of the major cause is stress and the risk factor also, but we never actually work on stress or even scientifically understand ki stress, what are the causes of the stress, what protocols can be used to decrease its effect on the body. And also I do not believe in stress management. You can never manage stress because life is synonymous with stress. So you will have various stressors or stressful incidents coming up, and various stressful uh, events will be continued with as you live, and that is the beauty of the life, means it will give you various challenges, only the stress. And also you will understand the stress is actually a protective evolutionary response humans have developed over a period of evolution of many thousand years. So what do we say कि संस्कृत में एक कहावत है, चिंताश्च चिताश्च बिंदु मात्र विशिष्यते, चिता दहति निर्जीव चिंता दहती जीवनम। इसका मतलब ये है कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिंता जो है वो जीवित इंसान को उसी तरह से जलाती है जैसे चिता में एक निर्जीव शरीर, मृत शरीर जलता है। इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे लिखा गया हमारे वेदों में, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, इसके बारे में लेट्स अंडरस्टैंड। सी फर्स्ट ऑफ ऑल let's understand how important stress gives us many diseases. There are many research papers have been published with proofs. So you can see more than 50% of autoimmune disease have attributed their disease to some unknown triggering factors known to be a stressful incident, and 80% of them have reported emotional stress before their onset of the diseases. Similarly, another study, it's a very huge study, means uh, uh, it was conducted on thousands of people. Also, this is heart and circulatory physiology, means it proves that American Physiology Society, they say कि cardiovascular disease has a very strong risk factor as stress. Let's understand कि stress होता क्या है, क्यों stress कैसे हमारी body में काम करता है. As I said कि stress is an evolutionary protective response. So whenever we are under stress, if there is a response from our body which is called as fright or flight response. We have a gland above our kidney which is called as adrenal gland. It has two parts, cortex and medulla. Medulla is the inner part, cortex is the outer part of the outer circumference area of the medulla. So what happens whenever we are under stress, we receive that stress in our neocortex, yeah, prefrontal cortex, we prefrontal cortex of our brain, that part, and hypothalamus. Hypothalamus is also known as the limbic system. Limbic system is an animal instinctive response area of our, it's the most primitive part of our brains. So limbic system has mainly responsible for food and reproduction. Also, it is the center for all stressful, it is the processing unit, we can call it processor of all stressful triggers are processed in our limbic system, hypothalamus. Now, hypothalamus through the spinal cord react, yeah, give responses to medulla then. So it is called pituitary hypothalamus adrenal, we call it HPA axis. Through this axis, whenever we are in acute stress, say you saw a dog coming towards you, yeah, charging towards you, or you saw a lion or something, so you want to run away from the danger. So what happens is you will need a more circulatory response. You will need more oxygen in your legs, in your lungs, you will need more blood flow in your legs. You will not want कि आपका during the running part you will have to go for stool or you will have to urinate. So body has a response to that. So what happens is with acute stress, adrenal medulla comes into picture and it secretes two hormones which is called adrenaline and noradrenaline. We call it norepinephrine also. So whenever this is secreted, your blood sugar levels becomes high.
अब आपको भागना है तो your muscles will need energy, they will need glucose, so the stored glucose goes into muscles. So the rising blood sugar levels, there will be increase in your BP, there will be faster breathing because you will need more oxygen, faster metabolism, increase attention also, and your digestion and kidney function slows down. This is acute stress. Also all these has been, we also generate acute stress artificially through our exercise regime, which we call it high intensity interval training, which you have all been doing your challenges. I have seen, just say 15 kilometers you are running, or running for 3 to 4 kilometers. It is for a time being, for a shorter period of time, you are artificially generating this response. Now imagine what happens if this stress, yeah, this stressful responses stay for a longer period of time. So we call it chronic stress. Now all your work schedules, work deadlines, general day-to-day commute to your offices, the traffic, your deadlines, your payment, your financial responsibilities, your family responsibility, many of the triggering factors gives you stress, and you cannot just run away from them. That's why I always say you cannot manage stress. Stress is a part of life. So what happens is, in a chronic stressful condition, the same HPA axis, hypothalamus pituitary adrenal axis, now adrenal cortex comes into picture, and another hormone is secreted, we call it cortisol, along with aldosterone. Now the same things which is beneficial for our running or fight or flight response now stays for a longer durations, chronic kind of response is produced. So your blood volume increases because aldosterone causes water retention. Your BP increases, your proteins to fat, जो ग्लूकोज से फैट बनता है, we call it glycogenesis is increased, your blood sugar levels increase, there will be immunosuppression, there is a cardiovascular disease का risk बढ़ता है, and there will be lower production of sexual hormones, so your libido decreases, kidney function slows down, you go into your digestive function decreases, you go into constipated states. So now you can see the signs. If you are chronically stressed, this HP axis will remain triggered through a longer period of times, and see the effect. All these effects are we now term as diseases. आप hypertension ले लो, आप water retention से edema ले लो, then you can call it high blood sugar levels को diabetes. So you just name them, and that is why stress increases the outcome for all these lifestyle diseases, and that is where stress response modification is very important. Of course you cannot decrease your stressors living a life, but you can definitely alter your response to your stressors. Now what happens is, you can train your body. Now you are walking, you are seeing your stamina increases, you are easily doing 15 kilometers in a week. We will increase this challenge. Similarly, as you train your body, you can also train your mind and your responses to various triggers you have as stress. Now I just it's mentioned ना कि aldosterone कैसे बढ़ता है, और next session will be on endothelial diseases like coronary artery disease, stroke and hypertension, जो हमारा next webinar होने वाला है. तो this is the research paper for that, how aldosterone and angiotensin 2 they combine and increase the secretion of renin as a hormone from kidneys. This will cause various disturbances in your electrolyte balance, the sodium levels increases, your body water retention increases, and similarly your BP and heart rate increases, and that is where vascular injury comes into picture. So and इसी के लिए आपको ACE inhibitors दिए जाते हैं, various angiotensin converting enzyme inhibitors. Here is the pathway where these medicines act. Normally whatever BP medicine you take, most potent ones are ACE inhibitors. Whenever you are chronically stressed, again HPA axis, which increases glucocorticoids, which I always say na, stress is synonymous with steroids. Our body or adrenal glands secretes cortisol, again glucagon, and similarly our medulla locus coeruleus norepinephrine secrete karta, which is also known as catecholamines. And these are the pathways how they cause endothelial dysfunction and atherosclerosis. आप cholesterol कम करने के, you are always taking lipid lower statins, but you are not
working, the real cause is stress to cause endothelial dysfunction. Now let's come down to the causes. हम लोगों ने कभी define नहीं किया, we are never able to define the causes. So throughout my learnings, my travels, have been to many Buddhist monasteries and various other things, and I've read a lot of books. You can call it motivational books, Bhagavad Gita and all. So this is the gist where I could identify where our stressors comes into pictures. So the Buddhist consciousness approach, it says all your stress comes down to three basic pointers. These are craving, clinging, and grasping. Whether you need a thing or not in your life, or whether it's good for you or not, there are many blessing in disguises we always have. Sometimes we are not able to get a thing which we want or crave for, but luckily or fortunately or unfortunately, it plays an important part in our future. So we keep on craving things. अब craving करते हैं जब, तो we are always we are not practicing gratitude here. So we are always seeing the glass is always empty for us, always. So we are always keep on craving things, and social media plays a very important role here. We keep comparing our lives to others. We do not appreciate the fact that starting point of everybody, their upbringing, their parental guidance, their financial status, their situations in their life, all are different. So we should not compare our lives with others. So craving is number one, which you need to act upon. Clinging is another thing. When you get something which you crave for, then you want it कि भाई ये हमारे पास हमेशा बना. You want a status quo in your life. You keep saying कि let's maintain this. आपने जो crave करके पा लिया, अब you want कि you always cling to that thing. ये कभी बदले ना. And that is where again stress comes, especially with our interpersonal relationships. Our kids grow up, they want to go out for studies, they might have to go to hostels and other things, and we are not able to accept that fact. Also our various there comes a generational gap due to various circumstances they are growing up in. All interpersonal relationships then comes from clinging. So we are not practicing acceptance here. We do not accept that kids have been growing, they have grown up and they have to leave us. So we do not accept this fact. Third is grasping. When we do not get what we crave, also we are not, of course, not clinging to that, then we do various things which our soul always tells us ki bhai you are doing wrong, but still we do that, and that is where we many wrongdoings for grasping a thing which we again crave for. So उसके बाद फिर क्या होता है, we live chronically in guilt, and the guilt comes into picture and your sleep is disturbed due to that guilt. So craving, clinging, grasping defines most of our stressors as per Buddha consciousness, and you have to practice gratitude, you have to practice acceptance, and you have to practice detachment to various worldly things if you want to be away from stress. Of course, I won't say ki you should not have desires, you should have desire, you need to get your things done, but you should not crave or maintain a stress for the same. The approach B, which I called 3 P's of stress, is a more practical approach. Most of our stressful triggers comes from people, project or problems. If you break it down to these simple things, see, people or interpersonal relationships, our colleagues, our office staff, whatever gives you, your kids. तो वी डू नॉट प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. एक तो मतलब हम एक ही चीज़ को इफ़ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग टू अस या समथिंग हैव हर्ट अस, तो वी डू नॉट प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. हम उसको अपने करंट प्रेजेंट we are not able to integrate that experience of hurt with our current present situations. तो हम present में नहीं रहते. We always keep living in our past. वो past का hurt हमें याद रहता है, and our future decisions about that person comes from that past. So that is where living in present is very important. Yoga actually is unity of being in present. तो आपको yoga and various other techniques we will discuss a few moments later. So we need to practice that to be living in the present. Forgiveness and detachment you should be practicing as much as possible. Of course, we are not able to do it 100%. We are normal human beings. We are not saints. But this will help decrease the effect of stress on your body. So you need to practice it as much as you can.
देन कम्स प्रोजेक्ट, हम हमेशा प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं, वी विल स्टार्ट लेटर, वी विल डू इट देन वी विल, लाइक आपकी आप लोगों ने डिसीजन लिया था अभी प्रोत्साहन प्रोग्राम के लिए भी, you might have been thinking of working on your health from a long period of time, but maybe whatever reason you are not able to find a good program, or whatever, you are not able to decide upon that. Many people still are awaited on joining the program, they keep asking us how this function, and they are not able to decide. So procrastinate all our projects, whatever we do. तभी कबीर ने बोला ना, काल करे सो आज कर. तो you should be doing it as and today as soon as possible. Do not procrastinate, because आपके back of the mind वो रहेगा, and then it will continue giving you these stressful feelings, and then ये जो कैटेकोलोमीन्स है ना, ये जो cortisol levels, they kept on rising. इसी वजह से आपका blood sugar और body में सूजन and the CRP levels increases, all the inflammatory markers. Then comes be realistic about it. We plan a lot of things, we write down कि हम आज ये कर लेंगे, but sometimes we get, सबके पास वही 24 घंटे, we get out of the limits of our abilities and time period. तो be realistic about it, otherwise आपके जो भी goals हैं वो stressful condition में आ जाएंगे. Then comes problems. हम सबके पास प्रॉब्लम है, लाइफ इज सिनोनिमस विद प्रॉब्लम्स, ठीक है ना. प्रॉब्लम्स से आप बच तो सकते नहीं हो, बट प्रॉब्लम्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है. यू कैन डिवाइड योर प्रॉब्लम्स इन टू कैटेगरीज. वन इज दोज हु हैव विच हैव सॉल्यूशंस. इफ यू हैव सॉल्यूशन, फाइंड आउट एंड डू दैट. एंड वन इज दोज विच, in spite of your best of effort, you are not able to find solution because it's not in your hand. It might have, the problem might be, the cause of problem might be someone else's decisions or someone else's efforts. Then you have to accept it and move on with your life. So practicing acceptance, gratitude is very very important, and mindfulness. Okay, then comes our what we call it, collective group which we live in. Most of us have limited people of limited group of people which we interact daily. अब ये पॉजिटिव होगा अगर ये ग्रुप आपके आसपास, दे विल पुश यू टू अ बेटर सेल्फ ऑफ यू. जैसे आप अब लोग हमारे ग्रुप में हैं, यू आर इन आवर ग्रुप एंड डूइंग थिंग्स विच यू हैव नेवर डन इन पास्ट ईयर्स. अब आप किसी नेगेटिव पीपल के पास बैठोगे तो नेगेटिव रहोगे. सो दैट इज वाई दिस होल जो हमने इकोसिस्टम तैयार किया ना, द ग्रुप विच यू आर, द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ ग्रुप इज पुशिंग यू टू get to your challenges weekly, and they will again give you challenges. We will further intensify the challenges, and they will give you collective energy to go through these challenges more easily and with a larger motivation. तो होता क्या है कि, so choose your group which you sit with you spend time with in a very intelligent manner. That is very important. Also reduce your social media and news feed. सुबह उठते ही do not start seeing your phone. This will waste your time. कम से कम आधा से एक घंटा हम लोग unnecessary past messages को देखते हुए we waste, and we suddenly procrastinate कि भाई एक्सरसाइज का अब टाइम निकल गया, धूप बहुत हो गई, गर्मी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हम बहाने ढूंढ लेते हैं. ऑफ कोर्स हमारा फ़ोन पे काम चलता है, जैसे वी हैव टू रिस्पॉन्स टू योर मैसेजेस एंड give medicines and other things, we have to be online presence. But our work time, just for example my work time starts at 2 p.m. I can dispatch medicine only after 2 p.m. and response to calls from 2 to 8 p.m. That is my working hours for the clinics. So why should I define the tempo of my day waking up at 6 a.m. and seeing the phone? So the tempo has been decided. तो मैं phone को I will start seeing it at 11 or 12 when I have gone through my workout, I have gone through my reading and whatever planning for the day I have to. So that is how you can change the way you live every day, because present is where you are deciding your life and doing what you want to do. And fear, of course जब हम future में रहते हैं, when we live in future we fear because future is always uncertain, and it is the source of anxiety. So living in present, all your techniques, all the techniques which will follow will be focused on living in the present, bringing your consciousness, your mind to the present. So whenever you live in past or live in future, when you live in past you will have various kind of regrets, various kind of hurt feelings and other things, and when future you will have uncertainty and anxiety. So depression आता है past से, anxiety आती है future से. So you have to live in your present.
Now, because I will not give you any bookish knowledge from psychiatry or psychotherapy textbooks, because इन लोगों ने पढ़ना ही शुरू, Sigmund Freud started reading psychiatry and generating his responses only after 1800s. So we Vedic science has far depth, in-depth knowledge about these things and has been used thousands of years written by. So from Bhagavad Gita, you need to, number one things for being living a stress less life, or uh, having a better response to your stresses, is having a purpose in life. आपने इकिगाई सबने पढ़ी है ना अभी रिसेंटली, इट्स अ न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर. इकिगाई का मतलब यही है ना कि पर्पस ऑफ लाइफ. यू शुड डिफाइन ए पर्पस ऑफ लाइफ, वट एवर यू वांट. अगर हम वैदिक साइंस के हिसाब से जाएं तो दे हैव डिफाइंड पर्पस ऑफ लाइफ एज 4 बेसिक कैटेगरीज. धर्मा, you fulfilling one's own purpose, whatever your purpose is. You are destined to do something. Like me, I am destined to do what am I doing. Maybe it is in my destiny to develop this Protsan program, or practicing homeopathy is one of my dharma which I am doing. So that is dharma. सबका एक एक धर्म होता है. You need to relate to it, you need to meditate upon it. Then artha, prosperity. We all have to earn for our families. Financial stability is very important. Then comes kama, desire, sexuality, enjoyment in life and reproduction. And then after that comes moksha. We all have to be enlightened and in purpose with the life, living in present. Buddha consciousness say living in the present. Buddhism as per se, as it originally originated, it does not believe in reincarnations. But now the things have changed, their concepts have been changed. Bhagavad Gita has defined human body into various, human body, the consciousness, the whole, what we call the collective consciousness, into 4 basic hierarchies. Let me give you, this is the shloka from Adhyay 3, you call it कर्म योग में अगर आप देखेंगे तो. सी, सबसे पहले है जड़ पदार्थ. जड़ पदार्थ इज और फिजिकल बॉडी, ऑल पंचभूत वी कह ना, 5 जो हमारे बेसिक, वो अर्थ वाटर सब मिलके हमारी बॉडी बनी है. सो दिस इज द जड़ पदार्थ, द बॉडी. देन कम्स, जिसे देह आप कहते हैं. देन कम्स इंद्रियां, द सेंसेस यू हैव, कर्म इंद्रिया, ऑल द सेंसेस, टच, स्मेल, टेस्ट एटसेट्रा. उससे ऊपर होता है मन, योर माइंड. मन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? योर what you think about, means your consciousness, you can call it. Then comes your buddhi. Buddhi means your brain, your thinking pattern where you decide things. And उसके बाद आती है आत्मा, your vital force which you are living. That's the proof. And this आत्मा is then is connected to the collective consciousness जिसे आप परमात्मा कहते हो. दिस इज नॉट एट ऑल बुकिश. आप इस हायरार्ची पे कभी समझ ही नहीं पाए, काम ही नहीं कर पाए. अब यही इंद्रियां हमारी, जो टेस्ट की आपकी इंद्री थी, जो आपको बोलती है मीठा खाओ मीठा खाओ, मीठे से ही हमें पसंद है, आपकी बुद्धि को हर लेती है. जब अगर आपकी बुद्धि हायरार्ची में से ऊपर है, आप बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, और मन फिर इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो. अभी आप कर रहे हो ना, अपना डाइट में चेंजेस कर रहे हो ना, आपका मन तो करता है आइसक्रीम खाने को, बट आप छोड़ रहे हो ना. दिस हार्डकोर फोकस for 6 months will change your future for 5 years. You will have a disease free life even for longer period of times. That is where I say, now this collective consciousness, जब हमारा ईगो बीच में आ जाता है, we does not understand this hierarchy. इसको एक शब्द यूज किया गया है भगवत गीता में, बार बार आप गीता का सार पढ़ोगे, 2 मेन कॉन्सेप्ट्स है, देह आत्मबुद्धि एंड आत्म संयम, इंद्रिय संयम उन्होंने बोला है बार बार कृष्ण जी ने. देह आत्मबुद्धि का मतलब क्या है? देह आत्मबुद्धि का मतलब है हम देह को ही अपनी आत्म मानने लगते हैं. हम, हमारी बुद्धि इसी मामले में गड़बड़ कर जाती है, भ्रष्ट हो जाती है. तो वी अंडरस्टैंड दैट वी आर सेल्फ, आई सॉरी, हम अपने आप को मैं बोलते रहते हैं, आई. वी कंसिडर अप्रिशिएट दैट आई ओनली विद द बॉडी. देह आत्मबुद्धि, वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट बॉडी हैज ए सोल विच हैज एन कॉस्मिक कनेक्शन, एंड दिस कॉस्मिक कनेक्शन इज देन बीन ब्रोकन और ब्लॉक्ड बाय आर ईगो. ईगो बीच में आ जाते हैं, हम समझ लेते हैं ये देही ही हम हैं. वी अंडरस्टैंड आवरसेल्फ ओनली विद द बॉडी. इसी को देहात्म बुद्धि कहते हैं, और इसी देहात्म बुद्धि को तोड़ना होता है बाय आत्म साक्षात्कार. ये वर्ड यूज किया है गीता में, यानी मेडिटेशन करके. दिस इज द पिक्चर फ्रॉम भगवत गीता इटसेल्फ. ठीक है. So this is the state. This hierarchy needs to be understood if you want to
गेट बैक टू योर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, क्योंकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपके लिए डिफाइंड है. इट वी ऑलवेज से यूनिवर्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल योर थॉट्स. तो थॉट्स आपको यूनिवर्स से आ रहे हैं, तो आप इस कनेक्शन को जब तक री एस्टेब्लिश नहीं करोगे आप स्ट्रेस से नहीं बच सकते. दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई ऑलवेज बीइंग एन अथीस्ट आई स्टिल रीड दीज बुक्स एज ए साइंटिफिक गाइडलाइंस. इससे बड़ी कोई मोटिवेशनल बुक्स नहीं है. ये जो इकिगाई एंड स्मॉलर बुक्स लिखते हैं ना, इन्हीं के एक एक दो दो श्लोक को इलेबोरेट करके राइटर्स लिव, दे राइट इट इन वेरी ब्यूटीफुल वेज एंड बीइंग द बेस्ट सेलर्स. सो असली ज्ञान यहीं पे है. तो आई डू नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग दोस्त. इससे बेटर है कि आप सोर्स बुक को ही पढ़ लो एंड इंटरप्रेट इन योर ओन टर्म्स. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, बॉडी द जड़ पदार्थ, देन कम्स इंद्रिया, इंद्रिया योर सेंसेस जो आपको बार बार बोलती हैं कि ये खाओ वो करो, ठीक है. देन कम्स, उससे इंद्रियों से ऊपर आता है मन, जो आपको मन जो इधर उधर भटकता है और बोलता है मीठा खा लो यार, कोई नहीं कल की कल देखे जाएंगे, वेट बाद में कम होता रहेगा. देन कम्स बुद्धि जो रोक सकती है इस मन को, कंट्रोल कर सकती है. और फिर आती है आत्मा, और दिस आत्मा हैज़ टू बी इंटरकनेक्टेड विद योर कॉस्मिक कनेक्शन जिसे आप परमात्मा बोलते हो. दिस इज द ऑल वैदिक हिंदू साइंस. अब वैदिक हिंदू साइंस को कोरिलेट करो विद द मॉडर्न राइटर्स. आई यूज बैच फ्लावर रेमेडीज इन आर ऑल साइकेट्रिक डिजीजेस. डॉक्टर बैच बीइंग अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ही नेवर हैड दिस, मतलब सोच सकते हो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हाउ कैन ही डेवलप ए सिस्टम जिसको उन्होंने कहा सोल ऑफ फ्लावर्स. ही वेंट इनटू वाइल्ड, वाइल्डली कल्टिवेटेड नहीं होते ये फ्लावर्स, आर नेवर कल्टिवेटेड, दे आर ऑलवेज taken from when they are growing in wild. They come from, he has derived those essence and developed 38 wonderful batch remedies. अब बैच रेमेडीज कैसे काम करती है, ये उन्होंने एक अपना esoteric relationship with man and flower दिया. These batch flower therapies go to this blockage and breaks this away and your cosmic connection is re-established. That is where batch flower remedies have no side effect. It is so wonderfully working in most of our cases. Even schizophrenia patients are finding good results. I'm not saying कि इनकी मेडिसिन बंद हो जाती है, but of course they are finding good results decreasing their medicines. So डॉक्टर एडवर्ड बैच ने ये सब मॉडर्न राइटर्स ने कैसे कोरिलेट किया है, तो यू कैन सी द कोरिलेशन विद भगवद गीता वेरी सिंपली. अगेन ही हैज़ डेवलप्ड दोज हायरार्ची इन सोल, एग्जिस्टेंस एंड और इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोल. सोल हमें हमेशा बता देती है आप गलत कर रहे हो, बट वी सप्रेस, हमारा बुद्धि बता देती है लेकिन हमारा मन उसको सप्रेस कर देता है. तो दिस कॉन्शियस कनेक्शन जब बन जाएगा तो यू विल लिव इन मोर हार्मनी. देन कॉन्सेप्ट ऑफ हायर कलिंग, डॉक्टर हैनेमैन द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, if you read the preface of the chronic diseases, he has beautifully written कि क्या है हमारी, he termed the word higher calling. For him it was his medicine, practice of medicine and doing good for the humanity. And then concept of evolution by Charles Darwin, ये तो हम सब जानते हैं. I totally believe in this. और tomorrow should be better than our today. तो हमको evolute करते रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात करो, एक चाहे आप अपने पढ़ाई की बात करो, वट एवर यू आर रीडिंग, वट एवर यू आर लर्निंग, योर बॉडी, योर वट एवर योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, योर लाइफ, वट एवर यू शुड बी इम्प्रूविंग ऑन थिंग्स. जब तक ये पर्पस आपकी लाइफ में रहेगा यू विल लिव ए मोर कंस्ट्रक्टिव एंड मीनिंगफुल लाइफ. देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इकिगाई, वही ओकिनावा, जापानीज लोग जो सबसे लंबा जीते हैं. दीज बुक्स हैव बीन रिटन, ये तो बहुत कॉमनली आप लोग पढ़ चुके हैं शायद, मोस्ट ऑफ यू हैव. These will be the techniques which we will be using in our future sessions. The purpose we have all discussed, this you have to meditate upon. Mindfulness, this will be your last session where we will be teaching you Buddhist breathing techniques which brings down your consciousness to the present. Then forgiveness and acceptance, of course you need to practice this. Pranayam, breathing exercise, I will elaborate in a minute. और आज ही आपका you will have a new challenge about breathing today. Then goal achievement meditation, we will use visualization. Visualization के बारे में भी मैं अभी थोड़ा बताऊंगा आपको. Then Dr. Garima will practice and give you demo session about various yoga asanas which we can use to decrease our physical stress. जो हमारा stress हमारे muscles में आ जाता है ना, various diseases you develop, fibromyalgia, irritable bowel syndrome, etc. These will be decreased with the help of yoga. And then batch flower remedies, if any of you need that. I don't think so कि we will be needing this. प्राणायाम, अब बात करते हैं breath work की. Why pranayam is so successful in treating so many diseases?
आपने कभी सोचा ब्रेथ वर्क कैसे काम करता है? सी, there is a nerve in our body called vagus nerve. We have मोटर सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम. उसके अलावा एक थर्ड सिस्टम भी है हमारे नर्वस सिस्टम में. वी कॉल इट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अगर हमें यूनिवर्स ने मतलब नेचर ने द बॉडी हैज़ बीन क्रिएटेड इन ए वे ना कि हमारा ब्रीदिंग और हार्ट रेट हमारे हाथ में होता है, यानी कि मोटर सिस्टम के, कॉन्शियस सिस्टम के, देन वी वुड हैव ऑल डाइड लॉन्ग बैक. तो इसीलिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डेवलप किया गया. Autonomic nervous system through this cranial nerves, which the most important one is vagus nerve, which almost supplies to all of the body organs. Now organs को ये supply करती है. It has two branches, sympathetic and parasympathetic. As for sympathetic, as for stress, whenever we are in stress, chronic or acute, this sympathetic nervous system is triggered more. तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जब ट्रिगर होता है, स्टार्ट होता है, देन व्हाट हैपेंस इज थ्रू दिस वेगस नर्व द प्यूपल्स आर डायलेटेड, द सलाइवेशन इज डिक्रीज. आपका मुंह सूखता है ना जब आपको डर लगता है. देन द ब्रोंकाइज आर रिलैक्सेस बिकॉज आपको भागने के लिए, फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. योर हार्ट बीट पम्प्स फास्टर, इंक्रीजेस, योर ब्रेथ रेट इंक्रीजेस, योर पेरिस्टाल्सिस डिक्रीजेस. You do not want to go for a stool when a dog is charging you, isn't it? तो then ग्लूकोज प्रोडक्शन फ्रॉम द लिवर, जिसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट. आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है जो स्टोर्ड ग्लूकोज से ब्लड में आ जाता है. देन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन जो हमने डिस्कस किया इंक्रीज हो जाता है. एंड योर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस. सो ऑल दिस गिव्स यू ए फिजिकल डिस्कम्फर्ट, फिजिकल डिजीज, ऑल दिस ट्रिगरिंग फैक्टर्स. तो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्विच करना है. The more time you spend living in parasympathetic nervous system, the lesser you will be diseased. The opposite effect comes from same vagus nerve. Your bronchi constricts now, your heart beat slow, your breathing rate slow, your digestion improves, your liver stores more fat, decrease blood glucose levels. कितना फायदा है देखो इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में रहने का. Now how can we do that? Now we can hack our brain, hack our vagus nerve using our breathing. कैसे? We can decrease the breath rate consciously. कॉन्शियसली जब आप ब्रीथिंग रेट को कम कर दोगे, आपकी वेगस नर्व को सिग्नल जाएंगे कि अब ये स्ट्रेस में नहीं है. एंड ऑल दीज इफेक्ट्स यू कैन गेट फॉर द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम. हाउ टू डू इट? ए प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स आई विल टेल यू. ब्रीदिंग की देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग विच आई यूज. प्राणायाम, ऑफ कोर्स देयर आर many types and it is very common. You can learn from various online platforms and books, but I am giving you a more practical, easy to follow breathing technique which you can follow throughout the day. See, I have divided breathing into 3 various types. Water breathing, the name itself suggests water आप पूरा दिन पी सकते हैं ना, you can practice this all day. Whiskey breathing, usually people take whiskey at night just to induce sleep and relaxation. So whiskey breathing mostly practiced for sleep at night. And then coffee breathing, which you कब कॉफ़ी आप पीते सुबह टू इंक्रीज योर अलर्टनेस, और वेन एवर यू फील स्लीपी यू यूज़ कॉफ़ी, है ना. तो दीज 3 टेक्निक्स. करना कैसे इसको? फॉर वाटर ब्रीदिंग यू विल इनहेल ऑन द काउंट ऑफ 4, और आपका सारा ध्यान आपके ब्रीदिंग पे रहेगा. तो यू इनहेल विद काउंटिंग 4, देन यू पॉज फॉर 2 सेकेंड on the count of 2 and you exhale again on the count of 4, like this. For whiskey breathing you will inhale on the count of 4, pause for the count of 2 and exhale for the count of 8. This will further decrease your heart rate and you will feel easily, it will be helpful going you to into deep sleep. And then coffee breathing, here you do not inhale, you are exhaling with shorter forceful bouts, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम होता है इस तरह से. तो दिस विल इंक्रीज योर हार्ट रेट. लाइक मतलब यू आर गोइंग फॉर ए वर्कआउट, आपको वर्कआउट से पहले चाहिए आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए. यू कैन प्रैक्टिस दिस व्हेन यू आर फीलिंग स्लीपी, डे टाइम स्लम्बर, आप खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, यू कैन प्रैक्टिस दिस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम्स एंड ये हार्ट रेट आपका बढ़ा देगा. बट फॉर do it very short brief of time, the coffee breathing, because heart rate ज़्यादा भी बढ़ा सकता है. तो you all have to practice water breathing daily on waking up for some time now, और sleep से पहले आप whiskey breathing, यही इसी वीक का
ये आपका ब्रीदिंग या एक्सरसाइज चैलेंज इस वीक का यही है. यू हैव टू प्रैक्टिस वाटर ब्रीदिंग जस्ट ऑन द वेकअप फॉर 5 to 10 minutes. ठीक है. देन विजुअलाइजेशन. We all have these chakras. Again, Vedic science comes into picture. For example, these are divided into Vibgyor. For example, Mooladhara chakra or the basic chakra, basic needs of need, reproduction, stability, energy, comfort, financial stability, all things comes from this chakra. अब कहीं ना कहीं हमारा ईगो ना इन सब चक्र में ब्लॉक होता है. वट एवर विद कंपैशन कम होगा तो आपका हार्ट चक्कर हंस. तो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड ऑन. वी कैन यूज विजुअलाइजेशन और गोल्डन बॉल मेडिटेशन to improve upon this. This we will discuss later in detail, but for a brief, we will imagine ourselves, we use visualization that a golden ball is moving throughout these chakras and spend more time on the chakra where we see या we understand कि हमारा consciousness यहाँ पे block है on this chakra. So if you don't feel कि you are not having any block at this, वैसे ऐसा होता नहीं है, then you can just imagine golden ball gradually rising on this. This can be collaborated with your breathing exercise which you will do in the morning. So you imagine these a golden ball radiating light going through this hierarchy of the chakras, and whenever it goes to that particular chakra, it will you will imagine that you are it is emitting the similar color of light. Visualization again is a Hindu practice. I said ना कि ये वैदिक साइंस ने इतना अच्छा हमें दिया है. People have treated, I have patients, even my mom have did it. She had a lipoma and उन्होंने योग निद्रा करके the lipoma is disappeared with that within a period of 4 months. This is a cancer patient with who have treated herself with 3-stage breast cancer था इनको. It's a means case study. तो उन्होंने visualization use करके along with the medicine of course she saw disappearance of that tumor. So इसी के basis ना there is a video game developed in Washington University which is helping people to go treat cancers. कैसे? They develop a video game in a way कि they are designing their proteins, which is actually proteins are the things which or cells secrete, and it indicates our DNA to generate various kind of proteins in general we need for our day-to-day functioning of cells. तो आप the game name is folded. You design your own proteins in a way कि these proteins kill the cancer cells. So they are working on it. They found good results with it. This is the game name of the game, Folded. University of Washington is using it at their Center for Game Science. Again, digital games have helped many people recovering their cancers. Have children helpful in battling cancers again. Now one more thing which you are already using, exercise. Exercise is the most potent and underutilized antidepressant and it's free of cost. जब आप एक्सरसाइज करते हो फील गुड हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं एंडोर्फिन्स एंड दे सिग्नल द ब्रेन टू बी इन गुड मूड. यू टेक बेटर डिसीजन, यू आर मोर अलर्ट, यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट वट एवर. सो जब आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है यू आर मोर इजिली लर्निंग थिंग्स. सो एक्सरसाइज इन टर्न्स helps you treat stress and you must be feeling this by now whenever you following your exercise challenges. Also, of course, you have to use a phone but in a judicial manner, especially before sleep. Take at least 1 hour away from it because it gives you a signal. The photons emitted gives you a signal that you are facing sunlight now, और sunlight के साथ फिर आपको difficulty होती है going into sleep. तो alarm के लिए I use this kind of physical alarm clock I use. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फोन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि ये बार बार आप रात को कभी नींद नहीं आ रही तो आप यू सी दिस स्क्रीन एंड इट गिव्स यू वेरियस काइंड ऑफ means the same photons which are secreted in the line and brain gets the signal that you need to be alert, you need not sleep. तभी circadian rhythm बिगड़ जाता है for the graveyard shift people. Most of them have various digestive and gastric issues and constipation and other, those who are working in the night. So no matter how hard you fast, now you are being given defined ways to know your stressful triggers and to work upon this. Start working on this. The weekly challenge is breathing this week. ठीक है, तो आपको अब वाटर ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना है for now. And that is the presentation from my side today. Okay, so I am now
turning my host control off. You can now ask any queries or anything related to these. Please go ahead. Any feedbacks? How did you like the session today, or was it helpful? Anything, and any questions on breathing techniques if you want. Yes, you can all unmute yourself and go through, please. हाँ जी विश्वजीत जी. Good morning. Morning. It was quite a very informative session. Uh, Regarding basically stress, अगर बोलेंगे तो yes, of course, अभी it is quite a very important part of our work as well as entire things, because we can't all of a sudden you are sitting and there is some challenges, and sometimes you are in a good mood and sometimes the mood is changed. So that's the reason, and sometimes such many things like nowadays work practice is not that the way our parents used to. Yes. हम लोग का टाइम होता था कि दोपहर में 1 घंटा 1.5 घंटा का रेस्ट लेके फिर जाते थे, शाम को टाइम पे आते थे. बट nowadays we do not have a kind of life where 9 to 6 kind of things are there. Probably 6 जो है 8-9 बज जाता है. Of course. So such things will definitely help. बट मेरा एक मानना है कि जैसे अभी हम लोग बहुत एंटिसिपेशन और फ्यूचरिस्टिक थॉट में चलते हैं कि अभी कुछ चैलेंज आया कि क्या होगा, तो उसको सडनली कैसे मैनेज किया जाएगा. तो वो एक चीज मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ. आई हैव बीन इनटू मेनी मेडिटेटिव प्रोग्राम्स एंड स्पिरिचुअल बुक्स आल्सो. आई ट्राइड मैनेज टू डू दिस एज वेल. We will बट give you, दिस we will try to give you Buddhist breathing techniques which I learned in the monastery of Hemis. It's situated in Ladakh. That will be our last session because it is quite at advanced level. But you can definitely start doing these breathing techniques which I and practicing more living in the present situation, gratitude and acceptance to your challenges, and then you will see things will change. But of course this has to practice consciously, and the hierarchy with which is given in Buddhist, see we all have cravings, ठीक है ना. And we had one participant in our last batch. He just simply he was on BP medicine for last 7 years. We will present the case study in the coming webinar. He will be joining us. So he practiced this technique of breathing daily. Even while driving he used to do that, and now he within 6 weeks the medicines are off, even the homeopathic ones and the allopathic for the BP I am saying. तो दिस नीड्स टू बी प्रैक्टिस. अब आपका मान लो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में हम लोग गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, ये करते हैं, जल्दी में होते हैं सब. इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दैट, ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस ब्रीदिंग टेक्निक, वाटर ब्रीदिंग. आपको कोई चैलेंज आया है जैसे ऑफिस में, आप चैलेंज पे तो फोकस कर ही रहे हो, बट ट्राई कॉन्शियसली ब्रीदिंग थ्रू इट. तो सडनली आपका हार्ट रेट कम आएगा, आपका ब्रेन और कॉन्शियसली फंक्शन करने लगेगा, एंड यू फील मच बेटर इक्विप्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस. अभी वाटर ब्रीदिंग कैसे करते हैं? 4 2 4 4 4 to 4. 4 inhale, 2 pause, 4 exhale, 4 second at the count of 4. Also we will also be giving a kumbhak therapy session. Kumbhak is more advanced to it. So as the challenge you cover and you get used to it, then comes in the picture kumbhak, where you kumbhak therapy mein you stop your breath for a very longer period of time. Try to do that. तो उसको लेकिन ठीक तरीके से करना है, बिकॉज उसमें हार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ता है, तो उसको ग्रेजुअली हम करेंगे. तो एज तो अभी के लिए आप वाटर ब्रीदिंग ट्राई कीजिए, एंड अगर आपको स्लीप इश्यूज हैं, ट्राई विस्की ब्रीदिंग एट नाइट. उसमें 4-2-8 है. 4 on the count of 4 you will inhale, then on the count of 2 you will pause, and exhale will be on the count of 8. सो जैसे सांस नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है, हाँ लाइक दिस. हाँ, that can be done. ठीक है. ओके, थैंक यू. Welcome. Yes, anyone else? हाँ जी रीटा जी. नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्कार जी, बताएं रीटा.
डॉक्टर साहब, आज ही का नहीं, सेशन आपके हमेशा अच्छे ही होते हैं थैंक और हमेशा एक प्रोत्साहन देके के जाते हैं। मैं खुद इस बात का एग्जाम्पल हूँ हाँ और जी, मानती हूँ अपने आप को। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, एक डाउट है मेरा, ये जो आपने अभी जो ब्रीदिंग वाला बताया है, हम्म, अगर आप इसको करके दिखा सके या इसकी कोई छोटी सी एक वीडियो डाल दें तो हम बेहतर फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, मैं अभी ग्रुप में शेयर है कर ना? रहा हूँ, डेफिनेटली। हाँ, इसके बाद आप डाल क्योंकि दीजिएगा अभी ताकि हम उसको वैसे ही प्रैक्टिस अभी कर वीडियो सकें। में करूंगा तो आपको उतना अच्छे से अप्रिशिएट नहीं करोगे। मैं, हाँ, नहीं मतलब बाद में जिसको देख के मैं कर सकूं हाँ, ऐसा। देयर इज ए रिकॉर्डेड वीडियो आई हैव ऑलरेडी, हाँ। इट्स ऑन द ग्रुप, मतलब हाँ, चैनल, तो मैं अभी अभी बस जस्ट डूइंग इट। और ठीक है सर, ठीक। ठीक है, और इसका, इस सेशन का रिकॉर्डिंग पहले भी हुआ है, वो रिकॉर्डिंग मैं जब हाँ। प्रीवियस सेशन का था वो भी डाल रहा हूँ, दैट इज़ इन हिंदी। ये हमने, हाँ। क्योंकि वी हैव पार्टिसिपेंट फ्रॉम ओवरसीज, तो ये इंग्लिश में किया है, हाँ बट जी। यू विल हैव दैट ऑल्सो, ठीक। ठीक है सर। शेयरिंग इट इन ए वाइल। थैंक यू। ओके। यस, यू आर डूइंग चैलेंजेस वेरी नाइसली, आई एम सीइंग। और जैसे जैसे यू विल डू आउट, मतलब जैसे आप चैलेंजेस कर रहे हैं और आप बाहर जाते हैं सन में, द सन हैज़ ए वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इट। आई थिंक आपको उसका एक्सपोजर का भी अभी साइंस नहीं पता। आई एम, मीन्स जैसे सन एक्सपोजर जितनी देर आपकी बॉडी को मिलता है ऑन योर डूइंग, वाइल डूइंग एक्सरसाइज, तो आउटडोर वॉक्स एंड आउटडोर एक्सरसाइजेज पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर ऑफ कोर्स वेदर नहीं अलाउ कर रहा, टाइम नहीं अलाउ कर रहा, तो दैट इज़ फाइन, बट जितना हो सके ट्राई टू डू इट आउटडोर्स। बिकॉज सिर्फ विटामिन डी और सनलाइट का यूवी रेज ही नहीं हमको लेना है, देयर इज़ अनदर वेव लेंथ वी यूज़, जैसे नॉर इंफ्रारेड, नॉन इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो एमिटेड बाय, जो रिफ्लेक्टेड रेज हमें वापस आती है, जैसे ग्रास आपको ग्रीन कलर दिखता है बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टेड बाय दैट, तो वो भी आप फायदा उठा सकते हैं। इट गिव्स यू मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, एंड दैट इज व्हाई at least 30 minutes of exposure to sun is very very important. So do a workout on the outdoors, in the park, being in the nature, that will be very helpful. Yes, Ruchi ji, please. हाँ, मुझे एक चीज़ बोलनी है कि मैं चक्रा हीलिंग और ब्रीदिंग हम्म, योगा हम्म, ये बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम्म, बट अभी मुझे क्या होता है, मतलब और मैं हैबिट ट्रैकर भी मेंटेन करती हूँ, इस मंथ नहीं हो पाया ठीक से, तो हम्म, मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आई एम डूइंग नथिंग, मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग, क्योंकि मैंने हैबिट ट्रैकर मेंटेन नहीं किया और जो भी उसमें टास्क मैं हर रोज करती हूँ वो मैंने नहीं करी है ठीक से। ठीक है। तो बट अ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे अभी भी कोई, अभी जैसे मैं सोकर सुबह से उठी हुई हूँ 4:30 बजे से, बट अगर अभी भी मुझे वापस कोई सोने को बोलेगा मैं सो जाऊंगी। हम्म, इवन ऑफिस में भी सीट में बैठे बैठे आई फील लाइक स्लीपी ऑल द टाइम। हम्म। मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, अभी भी मेरी आंखों में नींद है कि कोई बोल भी रहा हो तो मैं भी सो जाऊंगी वही बात है ऐसा। कि थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगे, मतलब सुबह वर्कआउट करेंगे ना तो आप ऑल अलर्ट रहते हैं। जस्ट फोकस ऑन द, आप अपने चैलेंजेस पे काम करो, हमने चैलेंज ऐसे ही डिवाइड किए हैं, तो आप एक एक करके करो। ऑफ कोर्स दीज आर, आई एम ए रेकी हीलर ऑल्सो, सेकंड डिग्री मैंने भी की थी, बट उसके बाद मुझे कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिला। बट दीज थिंग्स डेफिनेटली हैव ए लॉट ऑफ हेल्प, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, हर कोई रेकी नहीं कर सकता, ठीक है ना। एंड यू नीड टू गिव इट इन ए मोर प्रैक्टिकल एंड ईजी वे टू फॉलो बाय एवरीबडी, तो उससे हम्म। आप देखोगे इफेक्ट ईजी हो जाता है, प्रैक्टिकल सेशन में आसान हो जाता है कि कैसे हम इसको करें, ठीक है ना। अभी पर मुझे जैसे सेशन 1 और सेशन 2 मैंने नहीं किया था, मैंने वीडियोस तो देख लिया। हाँ जी। आई टोल्ड यू, अभी कंसल्टेशन जो हुआ था उसमें मैंने बताया था कि मैं मोस्टली वीगन ही हूँ, मतलब। हम्म। पर क्या कहते हैं कि मेरे को अभी वट फिजिकल चैलेंज व्हाट आई हैव टू डू, मुझे वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। फिजिकल चैलेंज जो पिछले वीक का था वो था 15 किलोमीटर, आपको एक वीक में माइलेज देना है हमको, वॉकिंग और रनिंग, ओके। यूजिंग यूजिंग नाइकी रन क्लब और स्ट्रावा ऐप। ओके। तो वो आप अभी से फॉलो कीजिए, अपने हर वीक आपको 15 किलोमीटर चलना है। बाय द टाइम यू गेट टू सेकेंड मंथ यू विल हैव ए फुल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज विच यू विल फॉलो थ्रू आउट द वीक, क्योंकि मैं धीरे ओके। धीरे आपको डेमो देते हुए हम ये करेंगे। एंड फॉर योर डाइट, डॉक्टर गरिमा विल सून बी हैविंग ए सेपरेट कॉल एंड गिविंग यू ए डाइट ऑन दैट। तो वीगन ओके। तो आप ले रहे हो, लेकिन कितनी कैलोरीज खानी है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होना है, कौन सा कम होना है आपकी डिजीज़ के हिसाब से, वो
आपको डिफाइन किया जाएगा ऑन योर डाइट चैलेंज फॉर दिस वीक. द चैलेंज इज दिस प्रैक्टिसिंग दिस ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग स्पेशली. एंड 15 किलोमीटर जो प्रीवियस चैलेंजेस हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे ही ना, उसको हम सेपरेट नहीं करेंगे. आपको 15 किलोमीटर का वॉक माइलेज चाहिए हमें. 15 किलोमीटर इन ब्रेक और इन वन गो, मतलब दैट इज अप टू यू. टोटल हमें 15 किलोमीटर का चाहिए इन ए वीक, and you can break it down to 3 kilometers by 5 session or 5 kilometers 3 session, or even if you want to exceed that वो भी बहुत अच्छा रहेगा. जैसे तो बिकॉज मैं जैसे आई हैव ऑलरेडी डन 15 13 10 ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर्स ऑलरेडी, तो दैट इज हाउ यू कैन डू दैट. ओके ओके, ठीक है, थैंक ओके, यू. मोस्ट वेलकम. Okay, I think the recording will be shared on the group for this session. Already shared the previous one, previous batch one, and also will next session will be related to environmental factors. As I said, now we have 4 pillars. We have covered in general diet, then covered exercise preview, and this was stress preview. Now the things will get after from the second month, things will get more specific and more intense. नेक्स्ट सेशन विल बी इन्वायरमेंटल. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फूड और इन्वायरमेंट से आपको बीमारियां दे रही है. तो नेक्स्ट सेशन विल बी फोकस्ड ऑन द कॉमन थिंग्स विच यू यूज डेली, मे बी मल्टीपल टाइम्स, गिविंग यू probably diseases like cancers. So we will be cutting down on that environmental factors. So that next session, next Saturday it will be on 9 a.m. I will share the link soon. That will be on environmental factors. Okay, for now have a good day, and any queries you have right now, please go ahead, or you can always put it on the group also. Any difficulty you are facing, anything, any questions, any feedbacks, please do that on the group itself. एक और क्वेश्चन है डॉक्टर, मैं Yes. ना ऑफिस में खाना खाने के बाद, मोस्टली लंच के टाइम के बाद मैं वॉक करती ही हूँ रोज. ठीक है. दैट इज आल्सो इन नो 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 काउंटेड. नो, आई विल नॉट काउंट दैट. आपको जो भी काउंट करना है नॉन स्टॉप करना है, और मुझे आपके स्टेप काउंटर से कोई मतलब नहीं है. मुझे ये 2 ऐप्स पे, स्ट्रावा और इस पे नॉन स्टॉप वॉक होना चाहिए. दैट इज ओनली काउंटेड एज. ये बहुत लोग आते हैं बोलते हैं हम 10,000 15,000 स्टेप करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट लूजिंग वेट, क्योंकि उनका हार्ट रेट जो है ना, दे आर नॉट, जैसे हमने आपको एक्सरसाइज सेशन में बताया, यू नीड टू डेवलप कोलेटरल वेसल्स. वो तभी होती हैं जब आपका कॉन्स्टेंटली हार्ट जो है पंप करता रहता है. जब आप वॉक करते हो, थोड़ी देर रुक जाते हो, फिर चलते हो, तो वो हार्ट रेट आप मेंटेन नहीं कर पाते. दैट इज वाई. तो दिस हैज टू बी, और प्रेफरेबली डू ऑल योर वर्कआउट्स फ्रॉम 5 to 8 AM, क्योंकि हमारी बॉडी में सर्कैडियन रिदम के हिसाब से इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो बेस्ट आपको एफर्ट्स का रिजल्ट देते हैं. आप सबके पास लिमिटेड टाइम है, जो भी आप एफर्ट पुट इन कर रहे हो, गेन मोस्ट ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम दैट. तो सर्कैडियन रिदम के हिसाब से वो टाइम बेस्ट है एक्सरसाइज के. 5 to 9 यू कैन एक्सटेंड, बट नॉट लेट, उससे बाद में और पहले नहीं. नॉट इन इवनिंग. तो इवनिंग भी कर सकते हैं अगर आपका वर्क मतलब नहीं अलाउ करता तो, दैट इज ओके. बट बीच में वीकेंड्स पे या जब भी, ज़्यादा प्रेफर कीजिए सुबह के टाइम करना. यू विल फील मोर अलर्ट, जो आप कह रहे हो ना स्लीपी फील करते हो, यू विल हाँ, मोर अलर्ट इफ यू डू इट इन द मॉर्निंग. ओके. 6 to 8 AM हमारा थायराइड हार्मोन सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है. हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत इजीली टेकअप करता है चीज़ों को. हमारे एंडोर्फिन जो हमने बताए, एल्डोस्टेरॉन, ये नॉरएपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स की मैंने बात की, ये उस वक्त सबसे हाई पीक पे होते हैं. अगर हम टेस्ट भी कराते हैं ना थायराइड का, या फिर मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स आर डन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग टाइम मोस्टली. हाँ, मेलाटोनिन एक अलग हार्मोन है जो रात को स्लीप में निकलता है, बट उसकी इतनी हम लोग कोई भी टेस्ट नहीं करता है. तो दैट इज़ वेयर द एक्सपोजर टू सन एंड अर्ली वर्कआउट कम्स इनटू पिक्चर. तो इसके पीछे की साइंस ये है. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. Okay, then we will wrap up the session. Have a good day. Follow this breathing technique as a challenge for the week, and then we will resume again at on Saturday for the environmental session. Also, I will request you to register for the hypertension. It will be I have done a lot of research. बहुत ही complex topic है ये. Coronary disease, stroke को prevent करना, peripheral artery disease, and hypertension. We'll be covering all this in the coming Sunday webinar. And it is a very comprehensive kind of
knowledge you will get, because ये multilateral approach होगी hypertension की cause हम अभी तक नहीं निकाल पा रहे, और most of the cases 95% cases are diagnosed as essential hypertension, means उसके पीछे का cause नहीं पता. तो we will go through it, और कैसे हमें फ्यूचर स्टेंट से बचना है, कैसे हमें स्ट्रोक से बचना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे with minor changes in your diet, and you will appreciate more why we have been focusing on gut microbiome, या जो डाइट आपको दी जा रही है वो किस तरह से आपको बेनिफिट देगी फ्यूचर में. So you will be more motivated to stick to this even after the program finishes, because this is a behavioral change focused program. तो आपको ये behavior को maintain करना है in the future also. Okay, bye for now, have a good day. Thank you.